In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Viewers, we are discussing parts of speech. And in this video, we are going to discuss pronouns. Viewers, pronouns words होते हैं. Pronoun is a word that is used on the place of a noun. Pronoun ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसे हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं ताकि रेपिटिशन ना हो सेंटेंस में बार बार किसी नाम की. एग्जाम्पल, आमना is a noble lady, she is a teacher. Viewers, you can see in the next sentence on the place of Amina we have used she. Next sentence, she is very dedicated. Again we use she on the place of Amina. This word she is a pronoun. Mr. Slim is her husband. Mr. Slim is noun. And in the next sentence, he is also a teacher. वो भी एक टीचर है. On the place of Slim, we use he. He is pronoun. They have two children. उनके दो बच्चे हैं. Mr. Slim और आमिना की जगह हमने they को यूज किया. They is also a pronoun. So pronoun is a word that is used on the place of noun. Noun की जगह पे इस्तेमाल होने वाले वर्ड को हम pronoun कहते हैं. व्यूअर्स, कॉमनली यूज होने वाले प्रोनाउंस आपके सामने हैं. आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, हु, विच, दैट, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, who, which, what, each other, one another, this, that, these, those, one, each, everyone, either, neither, none. Viewers, these are commonly used pronouns. Viewers, there is an exercise for you. आपने इसमें से जहाँ जहाँ pronoun यूज किए हैं उनको आपने underline करना है. Underline the pronouns used in the following sentences. Viewers, this is all from my side. अपना ख्याल रखें. अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें. अल्लाह हाफिज़.